Welcome to my channel BioAge and welcome to my new video. My new video is about few important questions which are the multiple choice question from the chapter Reproduction in Flowering Plant. This is the part 1 of the video. Let's see the question and their answer and their explanation. The first question is, what are the four holes of the flower arranged on? That means the four parts of flower, that is the sepal, petal, androecium and gynoecium, these four holes, where these holes are arranged, किसके ऊपर ये चारों पार्ट जो है वो अरेंज रहता है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन ovaries, second option stem, and third option petals, and fourth option is thalamus. The correct answer is the fourth option, that is the thalamus. Next question, the anthers and filaments from the options are, first option gynoecium, second option calyx, and third option androecium, and fourth option corolla. Correct option is C, that is the androecium. Anther and filament दोनों मिलके बनता है stamen, and stamen is the part of the androecium, that is the male reproductive part. Third question is, male and female flowers are present on different plants, that is dioecious, to ensure xenogamy. In options are papaya, bottle gourd, maize, and all of this. Correct answer is the option 1, that is the papaya. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट है. ऐसे प्लांट्स को हम लोग नाम देते हैं डायोसियस प्लांट, यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग है. और ये इंश्योर करता है कि इसमें जीनोगैमी होगा, या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. तो इसका एग्जाम्पल है पपाया. पपाया प्लांट में मेल एंड फीमेल प्लांट जो है वो अलग अलग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, spiny or sticky pollen grains are large, attractively colored flowers are associated with. First option is hydrophily, second option entomophily, third option ornithophily, and fourth option anemophily. Correct option is option B, that is the entomophily. Entomophily means the pollination by the insect. पॉलिनेशन इंसेक्ट से होने का ऐसे फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. उसका पॉलन ग्रेन जो है वो स्पाइनी होगा या स्टिकी होगा, साथ में फ्लावर जो है वो लार्ज अट्रैक्टिवली कलर्ड होगा ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइलिफ्रॉम apparatus in an angiospermic embryo sac? First option is brings about opening of the pollen tube. Second option guides the pollen tube into a synergid. Third option prevents entry of more than one pollen tube into a synergid. Fourth option none of this. Correct option is answer B, that is it guides the pollen tube into the synergids. The filiform apparatus present in the egg apparatus, ये हेल्प करता है पॉलन ट्यूब का एंट्री, जो सिनरगिड से एंट्री होता है, और उसके बाद मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट है वो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एग के पास पहुंचता है और पोलर न्यूक्लिय के पास पहुंचता है, यहीं से होते हुए सिनरगिड से होते हुए. तो सिनरगिड्स के तरफ डायरेक्शन देने का ही काम है फाइलिफॉर्म apparatus का. Next question, the female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization is. Options are, first option 8 celled, second option 7 celled, third option 6 celled, and fourth option 5 celled. Here it has been asked that the number of cell and number of nucleus we have to remember. That is, in the mature female gametophyte there is a 7 celled 8 nucleated condition. Hence the correct answer will be the 7 celled, that is the second option,
ऑप्शन बी दैट इज अ 7 सेल्ड. कितने सेल्स रहते हैं? 7 सेल्स रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन albuminous seeds food is stored in dash and in non-albuminous seeds it is stored in dash. Options are: first option is endosperm cotyledon, second option cotyledon and endosperm, third option is nucellus and cotyledons, and fourth option is endosperm and radicle. The correct answer is endosperm and cotyledons. That means in albuminous seeds, food is stored in endosperm, and in non-albuminous seeds, it is stored in cotyledons. यानी कि कोई भी सीड ऐसा नहीं होगा जिसमें एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन दोनों होंगे. एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है और नॉन एल्बुमिनस सीड में कॉटिलेडन में स्टोर रहता है. Next question is persistent nucellus is called as dash and is found in. The options are: first option perisperm and black pepper, second option perisperm and groundnut, third option endosperm and black pepper, and fourth option endosperm and groundnut. Correct option is perisperm and black pepper. That means persistent nucellus is called as perisperm and is found in black pepper. जो न्यूसेलस आखिर तक सीड में रह जाता है अटैच, उसको हम लोग नाम देते हैं पेरिस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर. An embryo may sometimes develop from any cell of embryo sac other than egg. It is termed as: first option is apospory, second option is apogamy, third option is parthenogenesis, fourth option is parthenocarpy. Correct option is option B, that is the apogamy. अगर कोई एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो सैक का किसी भी सेल से जो एग के अलावा कोई भी अदर सेल से डेवलप कर रहा है, उस फेनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं एपोगेमी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज: फर्स्ट ऑप्शन पी महेश्वरी, सेकंड ऑप्शन स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन आर मिश्रा एंड फोर्थ ऑप्शन बटलर. The correct answer is P. Maheshwari. P. Maheshwari is known as the father of Indian embryology. Question is: one of the most resistant biological material present in the exine of pollen grain is. Options are pectocellulose, second is sporopollenin, third is suberin, and fourth is cellulose. Correct answer is sporopollenin. स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंस बायोलॉजिकल मटेरियल. इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ Jasmogamous and Clistogamous flowers are present in. First option is Helianthus, second option Commelina, third option Rosa, and fourth option Gossypium. The correct answer is Commelina. Commelina is having both type of flower, Chasmogamous and Clistogamous both. Next question is: the outermost and innermost wall layers of microsporangium in an anther are respectively. First option endothecium and tapetum, second option epidermis and endodermis, third option epidermis and middle layer, fourth option epidermis and tapetum. The correct answer is fourth option, that is epidermis and tapetum. Epidermis is the outermost wall and tapetum is the innermost wall layers of microsporangium. Next question: if an endosperm cell of an angiosperm contains 24 chromosomes, the number of chromosomes in each cell of the root will be. Options are: first option is 8, second option is 4, third option is 16, and fourth option is 24. We have to remember that endosperm is a triploid cells, that is having 3 into n, that means 3 sets of haploid chromosomes, and root is having diploid cells, that is 2n, that means 2 sets of haploid chromosome. So 24 divided by 3, it will be 8, and 8 multiplied with 2,
that will be the 16. That means the root cell will have the 16, and the correct answer is option C, that is 16. 16 chromosome will be there in root cell. Question is the true embryo develops as a result to fusion of, यानी कि एक ट्रू एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, किसका रिजल्ट है वो उसका डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑप्शन इज टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक, उसके फ्यूजन से होता है क्या. सेकंड ऑप्शन इज एग सेल एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से. थर्ड ऑप्शन सिनर्गिड एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से. फोर्थ ऑप्शन मेल गैमेट एंड एंटीपोडल सेल्स के फ्यूजन से. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज द एग सेल एंड मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है ट्रू एम्ब्रियो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ embryonal axis between plumule, that is a future shoot, and cotyledons is called. Option 1 is hypocotyle, second option epicotyle, third option coleorrhiza, and fourth option coleoptile. Correct answer is epicotyle. The answer B. It is the portion between the plumule and cotyledon. उसके बीच का हिस्से को हम लोग नाम दे रहे हैं epicotyle. Question is the endosperm is completely consumed by the developing embryo in P. Option 1 is pea and groundnut, option 2 maize and custard, third option is custard and groundnut, and fourth option is maize and pea. The correct option is pea and groundnut, जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो completely कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा. Next question is how many meiotic division are required for the formation of 100 pollen. 100 pollen बनने के लिए कितने meiotic division का जरूरत है. Options are option 1 is 100, option 2 is 50, option 3 is 25, and fourth option is 26. Correct option is option C, that is 25. 25 meiotic division required for the formation of 100 pollen grain. एक meiotic division से 4 बनते हैं, तो 100 के लिए कितना चाहिए, 25 meiotic division are required. The question is the 3 cells found in pollen grain when it is said at 3 cell stage are. Option 1, 1 vegetative cell, second generative cells, and third male gamete. Second option 1 vegetative cell and 2 male gamete. Third option 1 generative cell, 2 male gamete. And fourth option either A or B. Correct answer is B, that is 1 vegetative cell and 2 male gamete. At the beginning, शुरू में pollen के अंदर सेल दो होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड करके 2 सेल बनाता है एंड दे फॉर्म द 2 मेल गैमेट. तो एक पॉलन ग्रेन जब वो उसका सेड हो चुका है उस समय उसके पास 3 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है लार्ज और 2 छोटे छोटे मेल गैमेट. Next question is a dicotyledonous plant bears flowers but never produces fruits and seeds. The most probable cause for the above situation is. पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, plant is dioecious and bears both pistillate and staminate flowers. Second option, plant is monoecious. Third option, plant is dioecious and bears only pistillate flowers. And fourth option, plant is dioecious and bears only staminate flowers. तो ऑप्शन डी के अनुसार प्लांट जो है वो डायोसियस है, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और जो प्लांट है मेल प्लांट है उसमें सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर्स रहते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ स्टेमेंस रहते हैं, पिस्टिल नहीं रहते हैं. दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. Thank you for watching the video.